Profitability Analysis, Part 1. We have discussed various segments or areas of a business or a corporation, and we have talked about several ratios related to those areas and how analysis is performed in those areas. Now we are moving towards the analysis of profitability. Two terms are commonly used. One is profit and the other one is profitability. The difference between the two is that one is absolute and the other one is relative. That is, profit is absolute. Profit हमेशा रुपीस या डॉलर्स की शक्ल में होगा और profitability हमेशा परसेंटेज की शक्ल में कैलकुलेट की जाएगी। यानी ये हो सकता है कि किसी बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी तो 20% हो लेकिन उसका प्रॉफिट सिर्फ 1 लाख रुपए हो, और दूसरे बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी तो सिर्फ 10% हो, उससे कम हो लेकिन उसका प्रॉफिट 1 करोड़ रुपया हो। तो percentage of profit and absolute amount of profit are two different things. Profit कैसे कैलकुलेट किया जाता है? Profit is simply the difference between the revenue or income and the cost and expenses. Revenue वो total amount है जो हम अपनी product या services को sell करके generate करते हैं। इसके अंदर cost भी शामिल होती है और इसके अंदर profit भी शामिल होता है। तो जब भी कोई business organization sales करती है या revenue generate करती है तो उस revenue में से उसके कॉस्ट और एक्सपेंसेस के सम को माइनस कर दिया जाता है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट भी हो सकती है और कॉस्ट ऑफ सर्विसेज भी हो सकती है, और एक्सपेंसेस वो तमाम कॉस्ट हैं जो किसी भी बिजनेस के ऑपरेशंस में यूज होते हैं। फॉर एग्जांपल मार्केटिंग एक्सपेंसेस और सेलिंग एक्सपेंसेस। इसी तरीके से हम एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस की बात करते हैं, इसी तरीके से हम फाइनेंशियल एक्सपेंसेस की बात करते हैं। ये तमाम एक्सपेंसेस माइनस करने के बाद हमारे पास प्रॉफिट की अमाउंट आती है। इससे पहले कि हम ये देखें कि प्रॉफिट कितनी तरह के होते हैं, हम ये देखते हैं कि ये जो प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस है ये किसके लिए अहम है। Who are the users of profitability analysis? Certainly the people who are going to get this profit. So they are the most concerned about this analysis. So if this ultimate profit amount is to be transferred to the shareholders, then shareholders are the key. They are the people who actually want to earn this profit, and they are the one who are most concerned about profitability of a business organization. We calculate the amount of profit at different levels. That is, there is gross profit. When we deduct only the cost of production or sales, from the sales or revenue figure, we get gross profit. यानी अभी हमने सिर्फ cost को minus किया है, expenses को consider नहीं किया. Once we also deduct the operating expenses along with the cost, then the profit we get is called net operating profit. यानी इसमें से हमने cost भी minus कर दी और operating expenses. और अभी हमने discuss किया कि operating expenses, marketing, administrative, journal expenses को हम कहते हैं। फिर इसके बाद हमारे पास कुछ और कॉस्ट या एक्सपेंसेस या लॉसेस और गेन्स होते हैं जिनको एडजस्ट करने के बाद हम उस फिगर पे पहुंच जाते हैं जिसके ऊपर इनकम टैक्स चार्ज किया जाता है। इनकम टैक्स इज जनरली चार्ज्ड एज अ परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट। So the profit on which the income tax percentage is applied is called profit before tax. And from this amount of profit, we deduct the amount of income tax, and so we get the profit after tax. In addition to that, we also calculate, using the income statement or profit loss account, the profit before interest and taxes. We also calculate the amount of profit before interest and taxes and depreciation and amortization. This is EBITDA. Why do we do that? We have discussed under coverage ratios that EBIT is significant because we want to see that excluding the interest cost,
how much the company has performed or the business has performed. On the other side, depreciation and amortization are two expenses which are called non-cash expenses, यानी जिसके अगेंस्ट कैश फ्लो नहीं होती. इनको भी निकालने के बाद हम ये देखना चाहते हैं कि एक कंपनी ने कितना प्रॉफिट अर्न किया. सो दिस इज अनदर प्रॉफिट विच इज कैलकुलेटेड. प्रॉफिटेबिलिटी किसी कंपनी की कितनी होनी चाहिए? 10%, 20%, 30%? ये डिपेंड करता है इस बात के ऊपर कि कंपनी की कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग क्या है, यानी उसने जो डेट और इक्विटी के ज़रिए से पैसा इकट्ठा किया है उसके ऊपर उसने कितने % रिटर्न पे करना है. यानी द कॉस्ट ऑफ डेट प्लस द कॉस्ट ऑफ इक्विटी should be the minimum level of profitability of the company. If the company is not earning enough to pay to the debt holders and to the equity holders, the company or the business is in problem, because the shareholders would start withdrawing their money and the debt holders would not be happy with the company, and as a result the company would get into a problematic situation. The market competition is also very important when we are talking about profitability. How much is the profit of the other business? How much is the profit of the other company? If you get a chance to compare some of the companies operating in the same sector or industry, you will find that some of the companies are more profitable than the others. यानी शुगर इंडस्ट्री में अगर आप एनालिसिस करें तो आप देखेंगे कि कुछ कंपनीज ज़्यादा प्रॉफिट कमा रही हैं और कुछ कम. इसी तरीके से ऑटोमोबाइल सेक्टर के अंदर, ऑयल एंड गैस सेक्टर के अंदर जब आप एनालिसिस करें तो कुछ कंपनीज के प्रॉफिट कम होंगे और कुछ के ज़्यादा. दिस मीन्स दैट प्रॉफिटेबिलिटी वेरीज एंड हेंस इट बिकम्स अ बेंचमार्क दैट यू आर परफॉर्मिंग बेटर देन द इंडस्ट्रीज एवरेज और बेटर देन द कंपेटिटर्स. एक बिजनेस को पैसा जनरेट करने के लिए अपनी उस इंडस्ट्री के अंदर जो कंपेटिटर्स हैं उन्हीं के साथ मुकाबला नहीं करना होता, बल्कि उसके साथ साथ उसे दूसरी इंडस्ट्रीज से भी मुकाबला करना है, बिकॉज शेयर होल्डर्स एंड लेंडर्स आर कंसर्न अबाउट गिविंग मनी टू द मोस्ट प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन. So the comparison of profitability may also be done with other companies or businesses operating in other sectors. Profit and cash flow are not the same, because profit figure includes some of the non-cash expenses too. We'll talk about it later on under the discussions of cash flows, but here it is important that cash flows and profit may or may not be equal to each other because of the non-cash expenses, because of the accrued incomes and because of the accrued expenses. यानी वो expenses जो pay होने हैं, वो income जो receive होनी है, वो cash जो पहले receive हो गया है लेकिन अभी earn नहीं हुआ. इस तरह की बहुत सी reasons की वजह से हमारे पास cash flow की amount profit के amount के बराबर नहीं आती. Profit को हम in totality भी measure करते हैं और इसको हम पर यूनिट भी मेजर करते हैं, यानी एक यूनिट को सेल करने पर हमारा कितना प्रॉफिट आता है. दिस इज व्हाट इज कॉल्ड मार्जिनल प्रॉफिट, एंड द टोटल प्रॉफिट इज दैट व्हाट वी हैव जनरेटेड इन अ पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड और इन अ पर्टिकुलर ईयर. सो वील बी टॉकिंग अबाउट these profitability ratios, and we'll see that how these are calculated and how these are used.